I'm audible? जी सर. So, dear friends, today we'll do class exactly for 55 minutes. So, 40 minutes do class and 10 minutes question, not more than that, okay? Fine. So, if you have still more question, you can ask in the group. So, now we are starting new meridian, that is the gallbladder meridian. Can we start? Gallbladder meridian. So, I will go. So, we will be learning gallbladder meridian as per TCM perspective, okay? So, let's start. So, I will write here, and if you miss something, you can ask me. Okay. Gallbladder meridian. So we know as per the 5-element cycle, liver and gallbladder both coming under the wood element, right? Liver we already have discussed. So now we are going to discuss gallbladder meridian. Liver का discussion हम कर चुके हैं पहले. So liver is the yin organ and gallbladder is the yang organ. So we already know the yin organ are solid. We know the liver is solid in the nature. And yang organ like a pipeline, hollow organ. Okay. So this is a very basic concept we already know. So very important thing here. If we talk about the gallbladder meridian, in the short we are telling it GV, gallbladder meridian. So gallbladder meridian is doing just collecting the bile juice. इसका काम है bile juice को collect करना. क्या gallbladder bile juice को बनाता है? No. Gallbladder is not making the bile juice. Bile juice is made by liver. Then it is coming in the gallbladder. Gallbladder is just the storehouse of the bile juice. जैसे हम चाशनी को गाढ़ा करते हैं ना, जैसे हम चाशनी बनाते हैं तो पानी में शक्कर डालते हैं, फिर उसे और गाढ़ा करते हैं, है ना? तो गॉलब्लैडर का वही काम है कि जब बाइल जूस आता है तो उसे वो और गाढ़ा कर देता है. सो द रोल ऑफ द गॉलब्लैडर जस्ट मेकिंग द बाइल जूस is highly concentrated. Suppose if we cutting the gallbladder, suppose many person having gallstone and they are doing surgery of the gallbladder, then what will happen? The bile juice coming from the liver, it is very like dilute bile juice, patla bile juice hoga. So the digestion will not be proper in these people. Okay. So now the main thing of the gallbladder is collecting the bile juice and making it more concentrated. Now what is the TCM perspective? TCM में कहते हैं, एक बात कहते हैं, the bigger the gallbladder means bigger the courage. अगर हम बोले कि ये व्यक्ति बहुत साहसी है तो इसका मतलब है कि इसका gallbladder बहुत स्ट्रांग है. So when we are telling bigger the gallbladder means more the courage, sahas. Gallbladder is giving courage.
सो दिस इज द मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसका मतलब ये नहीं कि गॉल ब्लैडर का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर बहुत ही स्ट्रांग होगा, गॉल ब्लैडर इज विल बी वेरी गुड। सो एज पर द TCM perspective, gallbladder is giving you courage so that you can take action। आपको कुछ एक्शन लेना है तो वो साहस देगा गॉल ब्लैडर। इफ द गॉल ब्लैडर इज वीक देन पर्सन विल बी टिमिड। अगर गॉल ब्लैडर कमजोर होगा तो व्यक्ति होगा कायर। क्या होगा? टिमिड, कायर। सो टिमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ पुअर energy of gallbladder, and we know we can just put one point, that is gallbladder 40, and we can strengthen the gallbladder। अगर हमें लगता है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा डरपोक है, कायर है, इसके अंदर साहस की कमी है, तो हम एक पॉइंट लगाकर बढ़ा सकते हैं उसका साहस। दैट इज कॉल्ड द सोर्स पॉइंट ऑफ gallbladder, gallbladder 40 or the 40। We will discuss this point later on। So we can discuss three things about the gallbladder। Number one, if the gallbladder is strong, person will be having good daring power। Okay। Having good courage। If the gallbladder is weak, person will be timid, कायर। 40, 40, 40, 39, 40, 40। If the gallbladder is having hyper energy, अगर gallbladder की एनर्जी जरूरत से ज्यादा है तो क्या होगा? दुस्साहस। यू नो दुस्साहस है ना? लाइक समवन इज गोइंग ऑन द रोड एंड किलिंग समवन इन फ्रंट ऑफ क्राउड, कि भीड़ में जाके आपने किसी को मार दिया, उसे बोलते हैं दुस्साहस। सो कायरता, साहस और दुस्साहस, ऑल थ्री थिंग्स कमिंग with the gallbladder, and we can balance it with the balancing of the gallbladder meridian। And in the TCM, when we talk about the gallbladder meridian, what are you thinking? जब हम gallbladder meridian की बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं? सिर्फ वो gallbladder organ के बारे में सोचते हैं क्या? So gallbladder meridian is not only the gallbladder organ, it is entire meridian, starting from the brain, then going in the chest, then going in the gallbladder organ, then going in the legs। So gallbladder meridian is not only the gallbladder organ, gallbladder meridian also controlling entire pipeline from top to bottom। सिर से लेके पैर तक की जो उसका रास्ता है, उस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे gallbladder कंट्रोल करेगा। So I will write here three things about the gallbladder। Number one, weak gallbladder, weak gallbladder। Number two, balanced gallbladder। And number three, hyperactive gallbladder। If the weak gallbladder, person will be timid। If the balanced gallbladder, person having good courage, and the person is having hyperactive gallbladder, we also discussed wrong courage, the wrong type of the courage। Is it clear? Now, very important thing about the gallbladder is giving you ability to act। जैसे आपने कोई प्लानिंग की, प्लानिंग कौन करवाता है? लिवर। If your liver is good, you will be doing very good plannings। Your mind always doing multiple planning if your liver is good, but you will able to act if gallbladder is balanced। तो लिवर प्लानिंग करवाएगा और गॉलब्लैडर इंप्लीमेंटेशन करवाएगा। अगर लिवर सही है तो प्लानिंग अच्छी होगी, गॉलब्लैडर अच्छा है तो इंप्लीमेंटेशन अच्छा होगा। सो वी कैन सी मेनी पीपल आर हैविंग, they are very good planner, they can do very good planning, but they just do planning, they never act। कुछ लोग ऐसे देखे होंगे आपने,
जो सिर्फ प्लानिंग करते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेते, इसका अर्थ है कि उनका गॉल ब्लैडर कमजोर है। हाउ टू स्ट्रेंथन? There are multiple points, but I told you if you want to strengthen the gallbladder, then gallbladder 40 or the 40 is the one of the great point located at the ankle joint. I will show you the location later on. Okay. Now, very important thing, we are having multiple joints in the human body. हमारे शरीर में कितने joints हैं? Okay. If the gallbladder is balanced, then we are having smooth movement of the tendons. If the person is having hard movement of the joint, if the person is not having smooth movement of the joints, we are having multiple tendon in the joints. जितने भी टेंडन लिगामेंट होते हैं वो जॉइंट्स के अंदर होते हैं। एक हड्डी एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से बांध के रखते हैं। इफ यू वांट टू हैव द वेरी गुड स्मूथ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, बैलेंस द गॉल ब्लैडर। हमें क्या बैलेंस करना है? हमें गॉल ब्लैडर को बैलेंस करना है। If the person is telling you, oh, I am having too much stiffness in my joint, I cannot have the good smooth movement of my joint, we have to balance गॉल ब्लैडर। हमें गॉल ब्लैडर को बैलेंस करना है, राइट? व्हाट आर द साइन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर की डिस्टर्बेंस के क्या लक्षण हैं? सबसे पहला लक्षण होगा मुंह में कड़वापन। पर्सन विल टेल यू, आई फील बिटर टेस्ट इन द माउथ। उसे आप मीठा भी खाने को दो और उसे कड़वा लगे, मतलब उसका गॉल ब्लैडर वीक है, गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब है। So the person is having some clinical sign like bitter taste in the mouth is the sign of weak gallbladder. So if the person is having bitter taste of the mouth, अगर मुंह में कड़वापन है तो इसका अर्थ है कि क्या कमजोर है? उसका गॉल ब्लैडर कमजोर है। Got it? So we are asking two questions from the patient कि क्या मुंह कड़वा रहता है? पहला प्रश्न ये होगा, मुंह कड़वा रहता है। दूसरा प्रश्न, सुबह रहता है कि पूरे दिन रहता है? अगर मुंह का कड़वापन सिर्फ सुबह रहता है मतलब हार्ट इम्बैलेंस है, और अगर मुंह का कड़वापन पूरे दिन रहता है मतलब गॉल ब्लैडर इम्बैलेंस है। आई विल रिपीट, दे आर आस्किंग टू क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट। ओके, डू यू हैव बिटर टेस्ट इन द माउथ? पेशेंट खुद ही बोलेगा मैं कुछ भी खाऊं मुझे कड़वा लगता है, मेरा मुंह कड़वा रहता है। ओके, सो डू यू हैव बिटर टेस्ट इन द माउथ ओनली इन द मॉर्निंग? इफ ओनली इन द मॉर्निंग, अगर मुंह में कड़वापन केवल सुबह है तो क्या इम्बैलेंस है? हार्ट इम्बैलेंस। But if bitter taste in the mouth throughout the day, all the time, what is imbalanced? Wood element imbalance or the gallbladder is imbalance. Very good sign, and with the help of this sign, we can balance the gallbladder. Okay. If the person is having gallstone also one the sign of the disharmony of the gallbladder, वो भी एक disharmony का sign है अगर किसी को gallbladder में पथरी है। So liver is making bile juice. Now it is coming in the gallbladder. लिवर ने बाइल जूस बनाया, अब गॉलब्लैडर में बाइल जूस पड़ा हुआ है। एज सुन एज वी ईट द फूड, हमने जैसे ही खाना खाया तो ब्रेन ने गॉलब्लैडर को सिग्नल भेजा और गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बाइल जूस निकलकर इंटेस्टाइन में आ गया। सो एज सुन एज वी आर ईटिंग द फूड, ब्रेन इज सेंडिंग सिग्नल टू द गॉलब्लैडर, देन देयर इज स्क्वीजिंग ऑफ द गॉलब्लैडर एंड बाइल जूस कमिंग इन द इंटेस्टाइन। बट द पर्सन कीप ईटिंग थ्रू आउट द डे। अगर एक व्यक्ति सारा दिन खाता रहे तो क्या होगा? Again he is doing the contraction of the gallbladder, then the quality of the bile juice will not be good, because the role of the gallbladder का क्या रोल है? बाइल जूस को गाढ़ा करना। अब कोई व्यक्ति सारा दिन खाता रहे, हर एक ही घंटे में खाता रहे, तो बाइल जूस वो क्वालिटेटिव बन ही नहीं पाएगा। So what will happen?
In this way, the bile juice will come. And what is the role of bile juice? Bile juice is responsible for digestion of fat. बाइल जूस से प्रोटीन का पाचन नहीं होता, लिवर से प्रोटीन का पाचन नहीं होता, लिवर से कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन नहीं होता. लिवर इज नॉट डूइंग डाइजेशन ऑफ द फैट प्रोटीन. लिवर इज नॉट डूइंग डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. लिवर इज डूइंग डाइजेशन ऑफ द फैट. लिवर से क्या पचता है? फैट पचता है. लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग अवर फैट. सो व्हेन द bile juice is coming, it is responsible for the digestion of fat. So when we are eating oil, when we are eating ghee or any type of the fat, so this responsibility goes to the bile juice. अब अगर किसी का लिवर गड़बड़ हुआ तो क्या होगा? Fat metabolism will get disturbed, right or not? If even I will tell you, liver is having indirect connection with the digestion of protein and carbohydrate also. But bile juice is directly working on the fat. Bile juice किस पर काम करता है? Directly fat पे काम करता है. So if liver is weak, then person cannot digest oily food. तो व्यक्ति तेल वाला खाना नहीं पचा पाएगा अगर लिवर कमजोर है तो. Okay. So remember one thing, liver is making bile juice, but gallbladder is releasing the bile juice. लिवर bile juice बनाता है, gallbladder इकट्ठा करता है और जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज करता है. Got it? So liver and gallbladder both are very important organ. Okay. So in this way, if we do the comparison between liver and gallbladder, pancreas also secreting some enzymes. Pancreas secreting lipase enzyme. Pancreas also secreting many other enzymes. LAT, lipase amylase trypsin. LAT. Lipase is doing digestion of the fat. तो फैट का डाइजेशन लिवर से भी होता है और पेंक्रियाज से भी होता है. अगर पेंक्रियाटाइटिस है, पेंक्रियाज की प्रॉब्लम है, तो भी फैट का डाइजेशन नहीं होगा. जब एक व्यक्ति घी की 1 चम्मच खाएगा, वो सेम घी उसके स्टूल में पास हो जाएगा. घी का पाचन नहीं होगा, तेल का पाचन नहीं होगा. पर्सन विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैट if having weakness of the pancreas. Remember one thing, whatever oil we are taking, the same will go out. There is no digestion of the fat. So the digestion of the fat happening by liver and pancreas. Got it? Okay. So remember one thing, हमारे जितने भी joints होते हैं, joints are controlled by wood element. Wood means movement. Like we are having shoulder joint, elbow joint, wrist joint, knee joint, ankle joint. We are having multiple joints, small joints, bigger joints. All the joints are controlled by wood element. Clear? Liver is giving nourishment to tendons, to ligaments, and gallbladder doing movement. लिवर देता है जॉइंट को नरिशमेंट और गॉलब्लैडर देता है मूवमेंट. विदाउट द गॉलब्लैडर हार्मनी we cannot move the joints properly. So that's why whenever you are working on the joints, always think for gallbladder balancing also. So liver is doing nourishment. Liver nourishment करता है. Liver is doing nourishment. Liver is supplying blood to the joint. Liver is supplying blood to the tendons. But gallbladder is doing movement. So liver is connected with the nutrition and gallbladder is having connection with the movement. If disturbed, if the wood element is disturbed, there is a very famous point, the gallbladder 34. It is very famous point, gallbladder 34, which is a very good point for all the joints, all the tendons, all the ligament. We will discuss this point because in our 5 transporting point, gallbladder 34 also coming. हमारे 5 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट में गॉलब्लैडर 34 भी आएगा, उसका हम डिस्कशन करेंगे.
If we put just 1 point gallbladder 34, we can improve the movements because gallbladder 34 is the master point of tendons. It is the influential point of tendons. ये हमारे टेंडन्स का, लिगामेंट्स का influential point है. That is gallbladder 34. If the wood element is weak, if the gallbladder is weak, what are the sign? Stiff joint stiff हो जाएंगे, मूवमेंट नहीं होगी, मसल टाइट हो जाएंगी, है ना. सो मेन थिंग, इफ यू वांट टू सी द हेल्थ ऑफ द gallbladder, just see the movement of the joints. If the person can move all the joints very properly, gallbladder is good. If the person cannot move all the joints properly, means the joints are weak. Okay, so the movement is equal to health of gallbladder. Then I also told you about the decision making power, है ना. Decision making, few person are having very wonderful courage. So liver is making planning, है ना. liver ने planning किया and gallbladder is doing implementation, execution. बिना गॉलब्लैडर के एग्जीक्यूशन नहीं होगा. आपकी प्लानिंग सिर्फ किताबों में रह जाएगी, सिर्फ धरी की धरी रह जाएगी. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी फेमस लाइन, द लिवर मेक्स प्लान्स एंड गॉलब्लैडर एग्जीक्यूट्स. ये बहुत ही एक सेंटेंस है कि लिवर प्लान बनाता है और गॉलब्लैडर से एग्जीक्यूट करता है. इफ योर गॉलब्लैडर इज स्ट्रॉन्ग, देन यू आर वेरी ब्रेव पर्सनैलिटी. आप बहुत ही बहादुर हैं. You are very confident. You are having good decision making power. But if the gallbladder is weak, then you are having lots of doubt. Oh, shall I do this? आपको लगेगा मैं करूं, अरे ना 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 करूं, करूं ना करूं. अगर गॉलब्लैडर वीक होगा तो इतने डाउट्स आएंगे. एंड यू नो प्रोकास्टिनेशन, चीजों को टालना, कल करेंगे, अरे परसों करेंगे. दैट इज अ साइन ऑफ वीक गॉलब्लैडर. Procrastination is the sign of weak gallbladder. If your gallbladder is strong, then you will, okay, I will do now, right now. I will do today. I will do right now. If the gallbladder is strong. If the gallbladder is strong, you are having good courage, you are brave, you are having good confidence, your decision making power is good. आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, है ना. आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप इमीडिएटली स्टेप लेंगे. But if the gallbladder is weak, yeah, Kamlaji, definitely your gallbladder will be very strong because you are very courageous. आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती हैं तो क्या आपके पैर कांपते हैं ऐसे, मतलब गॉलब्लैडर कमजोर है. If the gallbladder is weak, then in the difficult situation you will be hesitating a lot. You will be having lots of doubts. आपको इतने डाउट्स होंगे. You will have procrastination. अरे थोड़ा बहुत हम सबके साथ कभी ना कभी हो सकता है ना, कभी कभी. Then what we can do? Just do the treatment on gallbladder 40. Okay? Because we want to take the step, हमें साहस चाहिए लेकिन दुस्साहस नहीं चाहिए. In the China, people are telling, oh, you are having very big gallbladder. It means they're telling you are a brave person. Oh, your gallbladder is you are a small gallbladder person. It means you are a timid person, कायर. यानी अगर व्यक्ति कायर होगा तो हम बोलेंगे कि उसका गॉलब्लैडर स्मॉल है, कमजोर है. अब मैं बहुत ही ब्यूटीफुल चीज आपको बताने वाला हूं. लेट्स सी दिस वेरी वंडरफुल थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू हियर. देखो, सो व्हेन वी आर टेकिंग एनी डिसीजन, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, गॉट इट. सो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग. किसी ने हमें कोई प्रोजेक्ट बताया, वी आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, वी आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट समथिंग. हम किसी चीज को समझते हैं, हमें उस चीज के बारे में कुछ क्लैरिटी आती है. नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि एक अच्छा होगा, दूसरा कमजोर हो सकता है ना.
Definitely both will be affecting each other, but one weak other strong might happen. एक कमजोर एक अच्छा हो सकता है. Okay, it might happen. So now what I am telling you, मान लो किसी ने आपको एक प्रोजेक्ट समझाया, या आपने खुद समझा, या आपने खुद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की. ओके, सो फर्स्ट क्लैरिटी इज कमिंग फ्रॉम हार्ट. क्लैरिटी कहां से आती है? हार्ट से. सो द अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट. शेन, अगर हमारा हार्ट अच्छा होगा तो चीजें हमें क्लियर दिखाई देंगी एज इट इज. जो चीज जैसी है वो वैसी दिखाई देगी अगर हमारा हार्ट साफ है. गॉट इट? अगर हमारा हार्ट क्लियर है. If our heart is clear, we can see the things as it is. But if heart is not clear, अगर हार्ट शुद्ध नहीं होगा तो चीजें कैसी दिखेंगी? लाइक इफ क्लाउड्स आर देयर वी कैन नॉट सी द स्काई. अगर बादल हैं तो हमें आकाश नहीं दिखता, है ना? ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा हार्ट साफ नहीं होगा तो हमें आकाश नहीं दिखेगा, हमें और ही कुछ दिखेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप है ना किसी गाय के आंखों पे हरे रंग का चश्मा लगा दो तो उसको हर चीज हरी हरी दिखाई देगी, दिखेगी ना, है ना? अब हरा चारा नहीं है तो गाय की आंखों में हरा चश्मा लगा दिया तो उसको हर चीज हरी हरी दिखेगी, लेकिन वो हरी नहीं है. सो इफ द हार्ट इज नॉट क्लियर, हार्ट इज नॉट प्योर, देन वी विल नॉट एबल टू परसीव द थिंग एज इट इज. हमें चीजें वैसी नहीं दिखेंगी जैसी वो हैं. हमें कैसे भी दिख जाएंगी, हमारा मन कैसी भी कल्पना बना लेगा कि ये चीज ऐसी होगी. ओके, सो दिस इज द पॉइंट नंबर वन. सो क्लैरिटी इज कमिंग फ्रॉम द प्योर हार्ट. नाउ एनालिसिस. अब आप किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल एक आपको उदाहरण देते हैं कि आपने, यू आर प्लानिंग टू बाय वन होम फॉर यू. आप अपने घर को बनाने का प्लान कर रहे हैं. ओके, सो नाउ you are first having clarity that I should buy one home or I should take one home on for rent. First you should have clear idea. Okay, so this clarity is coming from the heart. Otherwise you're not clear, you're not able to think what to do, what not to do. Then the next step, analysis. कि आपने 4 घर देखे, अब आपको एनालिसिस करना है कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, oh this is very good, this is very very good. So the analysis coming from spleen and small intestine. The telling short listing. शॉर्ट लिस्टिंग कौन करता है? 10 लोग हैं अच्छे, उसमें से आपको 2 चुनने हैं, तो वो स्प्लीन और स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्थ ज्यादा है. स्प्लीन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन डूइंग शॉर्ट लिस्टिंग. सो आई विल राइट हियर अंडरस्टैंडिंग कमिंग फ्रॉम द हार्ट सेन. नाउ यू आर डूइंग एनालिसिस or you're doing sorting the information. That is coming with the help of spleen and small intestine. Now you can think if your spleen is weak or your small intestine weak, it will be very difficult to do the short listing. आपको शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं कर पाओगे कि आपके लिए आखिर इन 10 में से सही क्या है. You are having 10 thoughts, you are not able to understand, you are not able to short list it, what is right, what is not. So if you want to have this power, then your spleen should be good, your small intestine should be good, and we can make it good with the help of points. Okay, फिर अगली बात होती है, चलो हमने शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया, we also have done the short listed. कि पहले हमने 4 घर देखे, उसमें से हमने शॉर्ट लिस्टेड कर लिया, एक घर शॉर्ट लिस्ट कर लिया अपना.
Now planning is coming from liver hun. The third thing are planning. Okay, planning or is coming from liver hun. Okay, now I have selected one of my home. Now I am doing planning. Okay, I will do the things in this way. I will make interior in this way. है ना? I will keep my things in this way. So the all planning coming from liver. Liver is the planner. But execution or the action or the implementation is coming from the gallbladder. Implementation किससे आता है? Gallbladder से आता है. You are having good courage to take the implementation that is coming from gallbladder. अब आपका implement भी हो गया है ना. ये चीज हर जगह लागू होती है. जैसे आप है ना सब्जी खरीदने गए है ना, उसमें भी पहले आपने क्लैरिटी से देखा अरे वहां अच्छी सब्जी मिल रही है, फिर आपने उसमें से अपनी सब्जी को शॉर्ट लिस्टेड किया, उसमें अच्छी चीजों को छांटा है ना, खराब चीजों को अलग किया. दे आर डूइंग शॉर्ट लिस्टिंग. फिर आपने ले लिया, अब सोच रहे हो क्या बनाऊंगा जिसका हमें बढ़िया समोसे बनाएंगे, आलू कट करेंगे है ना. लेकिन अब एग्जीक्यूशन करना की रियल में बनाना वो करेगा गॉल ब्लैडर. सो इन दिस वे वी आर डूइंग दिस ऑल द मेरिडियन वर्किंग टुगेदर. सारे मेरिडियन एक साथ मिलके काम करते. जैसे एक लड़की की शादी हो रही है, उसने 10 लड़कों को देखा है ना. सो फर्स्ट द गर्ल हैविंग दैट क्लैरिटी दैट आई हैव टू मैरी. एक लड़की ने सोचा उसे शादी करना है, या लड़के ने सोचा. Now, out of 10, doing short listing, okay, this is not good, this is not having good package, or this is not having good height, or this is not looking so young, or this is not talking very properly. ऐसे आपने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया, हट चलो पीछे. अब बाद में एक बचा. So first you are having clarity that I have to marry, that is coming from the heart, shan. हार्ट से आवाज आई कि शादी करना है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्प्लीन गिविंग यू दैट पावर दैट यू कैन डू शॉर्ट लिस्टिंग. अगर स्प्लीन स्मॉल इंटेस्टाइन गड़बड़ हुए तो 10 में से कुछ उल्टा ही ढूंढ लोगे आप, अच्छा वाला छोड़ दोगे. नाउ planning, now you will do planning. Okay, now we will do marriage in the month of July, then we'll go for honeymoon, and then we'll have the very good home, and you're doing planning. That is what the liver. But implementation, execution by the gallbladder. But कहते हैं ना कि ये completion, but completion is coming from kidney. The willpower, the final willpower is giving kidney, so you can carry that thing till the last. That is kidney Z. In this way, we can see heart is involved, spleen is involved, small intestine is involved, liver, gallbladder, kidney. So these all organs are working in a very good synchronized way. Got it? Is it clear or not? Completion. कि आप कर रहे हो काम, you are doing your work because liver has done very good planning, gallbladder doing execution. जैसे आप अपना घर बना रहे हो तो लिवर ने बहुत अच्छा नक्शा बना दिया, गॉलब्लैडर से आप बना रहे हो, बट द फाइनल कंप्लीशन विल हैपन ओनली इफ द किडनी इज स्ट्रांग. नहीं तो क्या होगा कि कुछ पिलर खड़े हो जाएंगे और काम बीच में अधूरा छूट जाएगा. गॉट इट? Completion will happen with the help of kidney. Without the kidney, completion will not happen. That's why kidney is very, very important. Clear? So in this way, we understood this point. This is a very important point. तो मैंने आपको एक बात बताई. I will repeat that thing once again. Liver nourish
tendon. Gallbladder is doing movement of tendon, means joints. This is very important, so I have written once again. Okay. Now, if we see the person, if we are looking at person sometimes will come with a very common complaint of headache. Okay. So, if the person is having headache, अगर व्यक्ति को headache है, we know the gallbladder meridian is, you can see the route of the gallbladder meridian. आप gallbladder meridian का रास्ता देख सकते हैं कि how the gallbladder meridian encircling the brain हमारी brain को कैसे supply करता है. So the headache on the side of the head, that is called unilateral headache, हमारे सिर के साइड में होने वाला दर्द, or the unilateral headache, or the pain in the side of the body, और हमारे शरीर के साइड में होने वाला दर्द. So now what I want to tell you, if the liver is imbalanced, it will reflect on the gallbladder meridian. If the liver is imbalanced, person is having unilateral headache, सिर के एक तरफ दर्द होगा अगर liver imbalance है. So liver produce or the liver appear on the gallbladder channel. Liver कहाँ appear होगा? Gallbladder channel में appear होगा. Person will tell you I am having headache. कहाँ पर है? Right side में, left side में, one sided headache. Okay, liver imbalance. Or we can tell blood imbalance or the side body pain. Got it? So in this way, the gallbladder channel is the channel of the side. So there are two meridians who supply the side of the body. Number one, triple bottom meridian, and number two, gallbladder meridian. Both are the meridian of the side of the body, and both together are called Shaoyang. इन दोनों को हम शाओयांग कहते हैं. The Shaoyang means who supply the side of the body. Side of the body. You can also see the route of the gallbladder meridian, triple bottom meridian. आप triple bottom meridian का भी रास्ता एक बार देख सकते हैं. If you look at the triple bottom meridian, it is also supplying the side of the body. Now, if you see the gallbladder meridian, it is also supplying the side of the body. Got it? So liver is appearing in the gallbladder channel. Liver कहाँ appear होता है? Gallbladder channel में होता है. And the liver and gallbladder both together are called Shaoyang. दोनों को हम Shaoyang कहते हैं. So whenever any bacteria or virus is attacking, जब हमारे शरीर पर किसी बैक्टीरिया और वायरस पैथोजन का आक्रमण होता है, तो हमारे बहुत सारे बॉडी गार्ड होते हैं. Okay. So suppose some bacteria is attacking on the human body. There is some bacterial attack or some pathogenic attack. So there are multiple defense systems in the human body. So first bacteria has to fight with the first layer of defense system. Then bacteria virus has to fight with the second layer of the defense system. If still bacteria virus is very strong, then it will penetrate the third level and it will fight with the third level of the defense system. यानी हमारे शरीर पर जब किसी भी चीज का आक्रमण होता है, सर्दी का आक्रमण हुआ, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हुई, कोई भी बीमारी होती है, तो उसे पहले लड़ना होता है. अगर थोड़ा बहुत कमजोर वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, तो पहले लेवल पर ही मार दिया जाएगा. थोड़ा स्ट्रांग हुआ तो सेकंड लेवल तक जाएगा.
और स्ट्रांग हुआ तो थर्ड लेवल तक जाएगा, और स्ट्रांग हुआ तो और अंदर जाएगा। व्हेन द बैक्टीरिया वायरस अटैकिंग ऑन द फर्स्ट लेवल, तो हमें ठंड लगती है। क्या लगती है? ठंड, सिवरिंग। सिवरिंग इज द साइन दैट बैक्टीरिया वायरस has attacked on the first layer of the defense system. Got it? सिवरिंग होगी, कप कपी छूटेगी। आप बोलोगे पंखा बंद करो, अदर पीपल आर टेलिंग ओके पंखा चला, आप बोलोगे नहीं पंखा बंद करो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठंड लगेगी, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा। तो जैसे ही आपको लगे ना ऐसा लग रहा है, तो पहले लेयर को तुरंत ठीक कर दो, तो बीमारी अंदर ही नहीं जाएगी। We can clear the disease from the first level. We can clearly find person is telling I'm feeling shivering and I'm feeling headache on my occipital headache. But if the bacteria virus is attacking and going in the second level, अब person को आएगा fever. If the pathogen entering and reaching to the layer number 2 defense system, now it will create fever and even very high fever. Fever is the meaning of fever. Now first level already crossed. Now pathogen has reached to the second layer of the defense system. Now we have point of the second layer of the defense system. We will immediately apply the second layer defense system points. Now if the pathogen is strong, now it will reach on the third level. अब कभी लगेगी ठंडी और कभी लगेगी गर्मी, sometime chill, sometime fever, alternate chill, alternate fever. So there are three types of the defense system. At the first level, person will feel chill. Second level, person will fever. The third layer, person will feel alternate chill and fever. This third level is made by Shaoyang in triple Bormer and Gallbladder. और अगर ये तीसरे लेवल को भी क्रॉस कर लिया, अब बीमारी पहुंच गई गहराई में अंदर. Now that's why Shaoyang is called the junction point of exterior and interior. कि अभी तक बीमारी बाहर थी, अगर शाओयांग को भी क्रॉस कर लिया, अब बीमारी पहुंचेगी अंदर. अंदर मतलब सारे यांग मेरिडियन क्रॉस हो गए, पूरे 6 के 6 यांग मेरिडियन क्रॉस हो गए, अब बीमारी जाएगी यिन में. So that's why the Shaoyang is triple Borman, the gallbladder is called the pivot, the junction or the entry point where external and internal body are meeting. एक्सटर्नल का मतलब है जैसे आपके घर के बाहर आपने 3 बॉडीगार्ड खड़े कर दिए, बॉडीगार्ड नंबर 1, बॉडीगार्ड नंबर 2, बॉडीगार्ड नंबर 3. जैसे आपकी सोसाइटी है ना, वेरी बिग सोसाइटी. इन द सोसाइटी नंबर 1 सम person will enter from the main gate, that is called first defense system, security check. Then the person will come to your building, नीचे भी security guard होगा, building के नीचे, below the building we are having another security, that is called second layer of the defense system. Now the person will come and will knock the door, and you have closed the door, you are locked from inside, that is the third level of the defense system. But if someone is crossing all the 3 levels, then what will happen? Now entering in the home or not, कॉलोनी में घुसा, फिर बिल्डिंग में भी घुस गया, अब आपके घर के दरवाजे खोल के अंदर आ गया, अब घर के अंदर आ गया तो कहते हैं डिसीज बाहर से अंदर आ गई है. So when the disease is entering on the first level, person will be having shivering and chill, ठंड.
when the virus is reaching on the second level, that we are having fever or body heat, hot body. And third level means alternate chill fever. उसके बाद तो बीमारी अंदर हो गई, हो सकता है फीवर ठीक हो जाए, लेकिन अब बीमारी अंदर गई, अब बढ़ती रहेगी अंदर, है ना। जैसे किसी को डेंगू हुआ, है ना, डेंगू ठीक हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद डायबिटीज परमानेंट रह गया, मतलब बीमारी अंदर गहराई में आ गई। इज इट क्लियर? Right now, what I want to tell you, because I am focusing on the gallbladder only. So gallbladder हमारा third layer of the defense system है. If the gallbladder is disturbed, person will be having alternate symptom, fever, sometime chill, bitter taste in the mouth, side headache, है ना, sore throat is the second level. ये सब हम बताएंगे आपको, पूरे 6 लेवल हम आपको, इसके 6 लेवल होते हैं, 3 बाहर के 3 अंदर के, है ना। We are having total 6 level, 3 outer, 3 inner. We will discuss all. So it is clear. So now we will doing quiz. अब हम इस पर एक क्विज करेंगे. Can we do quiz? Okay, I will be giving you quiz. हम आपको एक क्विज दे रहे हैं, उसे करिए. If you have any doubt, you can unmute yourself and ask me about this quiz. तो हमने आपको एक भी बता दूं, झांग फू, झांग मीन्स सॉलिड, फू एक पाइपलाइन लो, आप इमेजिन करो आपके हाथ में पाइपलाइन है, छोटी सी स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ, उसे मुंह में रख के करो फू, हवा उसमें से जाएगी. यस सर. तो हॉलो ऑर्गन मीन्स फू, ओके. हॉलो ऑर्गन मीन्स यांग, ओके. और सॉलिड ऑर्गन मीन्स यिन. तो झांग है यिन और ओके. फू है यांग, तो झांग फू, तो यिन यांग को ही झांग फू बोलते हैं. ओके. क्लियर? ठीक है नाउ कैन सर. डू. ओके सर. थैंक प्लीज रीड. हु विल रीड? डन. अभी पढ़िए, कौन पढ़ेगा? यू. एक बार अनम्यूट करिए फिर से अपने आप को. Gall bladder is unique because it is only a full organ. B. B. D. B. B. Both a organ and extraordinary organ. Extraordinary organ. तो Extraordinary organ क्या होता I है? will tell you one thing. Gallbladder is the young organ. Are you agree? Yes. Yes, sir. Why? Because it is not making bile juice. Okay. Yes. But you can see the behavior. What is the behavior? Behavior, it is containing the bile juice like a mother. And when needed, it is releasing the bile. Right? So gallbladder is having young nature, but it is working like a yin. So that's why we are telling it extraordinary. Oh. Got it? Or because it is young, so we are telling it फू organ. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा? D. D. So Both the of answer will be B. अब हमारा अगला क्वेश्चन A full organ and extraordinary organ. D. D. D Sir. D. D. पहले क्वेश्चन तो पढ़िए. सर क्वेश्चन 1 का D है ना, मतलब आप बताइए. आप बताइए. Gallbladder सर is आपने unique बोला because it is एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, क्योंकि स्टोर करता है. D. तो डी होगा ना. तो इसका है ना, ये फू ऑर्गन भी है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गन రౌండ్ దాంట్లో కూడా ఒక చట్నీ ఉంది తెచ్చుకోవద్దు है ना. Yes, sir. Gallbladder meridian is the फू organ as well as the extraordinary organ.
Got it? Yes, Okay, sir. sir. Question number 2. Gallbladder stores which substance? Bile. Bile. D bile. गॉलब्लैडर Bile. क्या स्टोर करता है? बाइल को Bile. स्टोर करता है. क्वेश्चन नंबर 3. Bile. Bile is produced in liver. Liver. So bile is produced in liver, then stored in the gallbladder. So Gallbladder. bile कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में प्रोड्यूस Liver होता है. Liver में. Question number 4. Main digestive Main role digestive of role. gallbladder is help digest Help fat. digest fat. तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं. इसमें है कि गॉलब्लैडर का जो मेन रोल है डाइजेस्ट द फैट. क्वेश्चन नंबर 5. Which organ Which gives the organ plan gives- and strategy? Liver. Liver. हम प्लान और स्ट्रेटेजी किससे करते हैं? We do with the liver. Question number 6. Which organ gives courage to act? Gallbladder. Gallbladder. So which organ gives courage to act? That is the gallbladder. Question number 7. If gallbladder is weak, the person becomes fearful and Fearful and indecisive. अगर gallbladder weak है, if the gallbladder is weak, person will become fearful and indecisive, will not able to take the decision. Yes, Question sir. number 8. gallbladder mainly controls movement of Sinews and tendons. So Sinews gallbladder and mainly control tendons. movement of sinew and Sinews and joints. tendons. Question number 9. known as the master point of Tendons. tendon. Gallbladder 34 is known as a master point of Tendons. tendon. Question number 10. Gallbladder and Sanjiao Yeah, together from the Shaoyang. Gallbladder and the triple wormer of the Senja together forming Shaoyang. Question number 11. Shaoyang acts as pivot between Between the interior and the So exterior. pivot means junction from exterior to interior. Interior. Remember I told you? yes, Question sir. number 12. Final step of completing decision comes from kidney Z. Kidney Z willpower. D. Done. So final step of the completion is coming from kidney Z. Anyone having any questions? Only one question. No question. Very good. So let's conclude the session. Now see you tomorrow. Kal milenge. Thank you so much. Good night. Sir, thank you. Thank you, sir. Okay, good night, sir. Thank you.